Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video we are going to talk about a few empties as in products that I have finished over, like completely finished within like last 6 months or year. And I'm not sure अगर मैं इसके दो पार्ट बनाने वाली हूँ because I do have quite a lot of products, okay? And maybe मैं इसके दो parts बनाऊंगी because maybe मैं ना बनाऊँ, I don't know, but if this is like दो part में चल रहा है, then this is the first part, and अगले week में you will get the second part, and yeah. So without any further ado, let's get into this video. Let's go. So the products that I have emptied mostly are skincare based products because I think मैं ज़्यादातर skincare ही ख़त्म कर पाती हूँ as compared to um, you know what as compared to makeup. Wait a second, I'm a little wait, please pardon my period brain, it's not working that well today. I just realized कि मैंने दो तीन चीज़ें कल ही फेंकी हैं, like उनके डब्बे मैंने कल ही फेंके हैं, and I could have talked about them in this video. I'm sorry, I will give them an honorable mention last में जाते जाते, right? So yeah, so the first thing that I have for you is this. This is the Dot and Key Skincare Hydrating 27-hour 72-hour Gel Moisturizer. You know, it has been really long since मैंने video बनाई है, so I have forgotten how to do it, sorry. So this is their 72-hour moisturizer, and as you can see, it is empty to the core because yeah, it was a nice moisturizer for your summer, right? And ये छोटी सी bottle it cost 350 rupees, and ये है कितने ml होगा ये 25 ml, right? And this is very much comparable to your Pond's Super Light Gel. So if you are a avid fan of that Super Light Gel, you can definitely give this one a try. बट वट आई हैव नोटिस्ड इज कि पॉन्ड्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ता पड़ता है बिकॉज वो बड़ा साइज आता है और वो सस्ता आता है, और ये छोटा है और ये महंगा है. सो दैट इज़ वन थिंग. बट मुझे इसकी खुशबू, पॉन्ड्स की खुशबू से ज़्यादा पसंद आई. लाइक इसमें एक लिटिल बिट ऑफ लाइक एक लक्स टाइप की फीलिंग है. सो इफ़ यू लाइक दैट यू डेफिनेटली कैन गो विद दिस. अगर आप इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे जो सस्ता है, आई विल टेल यू पॉन्ड सुपर लाइट जेल इज जस्ट द सेम. Okay, you can give that a try too, right? So yeah, this was the first empty. I like this cream, it was a good one, but I do have a alternative to this which is Pond Super Light Gel, जो कि बड़ी बॉटल इतनी इससे सस्ती, आई थिंक उसकी सबसे बड़ा टब इससे सस्ता आता है, एंड वो बड़ा टब आपको पूरी गर्मी में पूरा साल निकाल सकता है, वो बहुत बड़ा टब है. सो या, दिस वाज द फर्स्ट वन. एंड या, सो next up I have for you is this is Nivea Naturally Good Body Deodorant, and this was in Bio Green Tea. तो निविया की ना एक नेचुरली गुड रेंज आई थी, आई थिंक 21 के अराउंड, एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी भी अवेलेबल है या नहीं. यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट चेक, इट विल बी ईजियर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थी और वो डिसकंटिन्यू हो गई. बट मुझे वो रेंज बहुत पसंद थी, स्पेशली उसके ये डियोज एंड ये रोल ऑन वगैरह मुझे बहुत पसंद थे. ये बायो ग्रीन टी था, एक टी ट्री था, आई थिंक ये दो तीन इस तरह की फ्रेगरेंसेस थी और मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद थी. इवन उसके बॉडी वॉशेस भी बहुत अच्छे थे. तो ये दिस इज वन वाज अ डिओड्रेंट, राइट? इसका मेरे पास रोल ऑन भी था जो मैंने ख़त्म कर दिया था, राइट? सो या, आई थिंक नेचुरली गुड रेंज का सीन ऐसा था कि आप इसकी जो प्लास्टिक थी वो रिसाइक्लेबल थी और ये ग्लास है तो ये रिसाइक्लेबल एंड समथिंग लाइक दैट. सो दिस वाज लाइक एनवायरमेंट फ्रेंडली टाइप ऑफ अ थिंग. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ अवेलेबल एनी मोर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है. मैंने इस तरह के ये वाला जो डियो है और इस वाले जो रोल ऑन सीरीज़ का जो रोल ऑन था, मैंने आई थिंक पिछले 2-3 साल में हर साल में यूज़ किया है बिकॉज आई रियली लाइक देम दैट मच. दिस फ्रॉम माई एंड वॉज अ रियली नाइस प्रोडक्ट. आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी भी होगा या नहीं. अगर मुझे कहीं से भी ये मिल गया, विच आई एम कॉन्स्टेंटली सर्चिंग, मुझे अगर मिल जाए, अगर तो ये मुझे मिलते हैं, आई विल लिंक देम डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ इट इज़ डिसकंटिन्यूड देन दैट इज़ आवर लॉस बिकॉज ये बहुत अच्छे थे. इट वॉज रियली गुड फॉर समर यार. दे वर फ्रेश, दे मेड यू फील फ्रेश, दे गिव यू दैट फ्रेग्रेंस, इट वॉज एवरीथिंग गुड. I feel the emptiness. Chalo, anyways, let's move on, right? Then let's come to another skincare thing, which is this 30-day miracle toner from Some by Me. This is a travel pack. मेरे पास पूरी travel kit थी, उसमें से मैंने ये टोनर खत्म कर दिया, right? And talking about this toner, तो मैं फिर इसकी बात करती हूँ. Miracle Serum, like ये दोनों कॉम्बो में है, सीरम एंड टोनर. Can you see it?
आई डोंट थिंक सो, इस पे लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है. Yeah, so these were toner and serum, and ये है AHA BHA PHA 30-day miracle kit which has tea tree and Centella asiatica. So मैं first बात करती हूँ toner की. This is one of my most favorite toners. Like इसकी मैंने दूसरी बॉटल भी परचेज की थी, like ये सेम साइज, और वो भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने को है. That is how much I have loved this toner. Like your acne prone skin is gonna love this toner because it is soothing, it calms you down, and it is really gentle on the acne. It sort of like soothes that acne. Like आप कई बार होता है ना acne बहुत painful और irritated होता है. This sort of soothes your acne and I really like it for that purpose. At the same time, it is very hydrating. So you know, एक वो initial hydration जो ये toner provide करता है, it is अनबिलीवेबल. ये पूरी किट ना, इसके अंदर एक टोनर है, एक मतलब ये टोनर है, ये सीरम है, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एक सोप है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्ने. सो इफ यू दैट पर्सन जिसका एक्ने प्रोन स्किन है, you should definitely give this a try. This is all good. Centella asiatica, tea tree, all good for acne. I would definitely recommend this to you because it is nice. It is really good. This kit is miracle literally for acne prone skin. Definitely give this a try. And जब मैं इस टोनर को अच्छे रिव्यूज दे ही चुकी हूँ, next up I have serum from the same range. This serum, again it has tea tree, it has 14.5% natural Centella asiatica. Centella asiatica कोरियन लोगों को बहुत पसंद है, and honestly speaking I really like it too. मुझे अच्छा लगा ये सीरम भी. इसका भी दूसरा जो मेरे पास है वो भी मैं काफ़ी हद तक ख़त्म कर ही चुकी हूँ. वो तो बहुत छोटे छोटे थे. इसका जो बड़े बड़े पैक है ना, वो लाइक लिटरली 2,000 रुपये के हैं, तो मैं छोटे छोटे पे ज़्यादा प्रेफर कर रही थी. I really like it. It smells like green tea. It smells really nice. Again, for soothing and calming your skin, all that acne. This is really nice. Like ये दोनों चीज़ें ना acne prone skin वालों के लिए वरदान है because they are that good. So you should definitely give this a try if you are that acne prone person and you would really like this. To give this a try. Next up, acne की ही बात करते हैं, तो मैं ये चीज़ों की बात कर लेती हूँ. We have this CosRx acne patches. You know, it is acne pimple plus मास्टर पैच. सो इसके अंदर थे 24 पैचेस और ये 700 रुपये का है. ठीक है, दिस इज वेरी कॉस्टली एक्ने पैच. नाउ मैंने एक्ने पैचेस की डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हर एक पैच को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. यू कैन वॉच दैट. ये CosRx के जो पैचेस हैं, these are like your regular acne patches. There is nothing revolutionary about them, like you know, like your general acne patches. But मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा costly थे. That is something that I did not like about them because मैंने बहुत सारी कंपनीज के ट्राई किए हैं. ऐसा इनमें revolutionary तो कुछ नहीं था, बट ये महंगे बहुत ज़्यादा थे. So I would say you can save your buck with this one. You can go with other acne patches, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी. आप उस वीडियो में चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारों की बात की थी. So you can save your coin with this one. You don't need this. Yes guys, that's it for today's video. Tune into part 2, right? Because मेरे पास अभी भी बहुत सारा सामान पड़ा है. Yeah, we'll meet there. Okay, hit the like button, subscribe to this channel if you haven't already. I'll meet you next video guys. Bye bye.